Hello and welcome to Ecoholics. So, here today we'll discuss the most important news for India's perspective as well as India's economy's perspective. Sorry for the delay, and there was a 5 minutes delay due to some network issue, but now everything is all right, and we are about to begin our session for Indo-US trade deal, which is actually not struck off, but what they have done is there are certain issues left between USA and India. In order to clarify these doubts, then the trade deal will proceed. So that's the scenario. तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड डील हुई है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या था और क्या क्या और भी चीज़ें हैं जो कमी रह गई है इंडो यूएस ट्रेड डील को लेके, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे. Before that, I would like to announce that we are conducting a free test series program for UGC NET Economics Optional and Indian Economic Services. For that, you can register on our website, that is ecoholics.in, and very soon you'll get a lot of study material on this website as well. So don't forget to follow Ecoholics on website, YouTube, Instagram as well, and other social media platform. Apart from this, we are also having the mobile app. Here we provide the full courses. So if you are interested, you can call on this number. So let's begin our discussion today. So what we are doing is today's discussion regarding Indo-US trade deal. So India and United States, two important global partners in trade. And before that, I just want to thank you all because we have surpassed the 40k mark in the subscriber count on YouTube. So thank you for following Ecoholics and trusting me in particular as well as our initiative of Ecoholics. So thank you so much because all the students are giving a great support to this initiative. So thank you all who are having this live discussion right now. So coming on to the topic, that is Indo-US deal. I hope you all are here and let's begin this deal. Now there are certain differences arising between these two countries, that is India and USA, regarding, we can say, regarding the tariffs. So tariffs and other duties that India and United States are imposing. Generally what US is demanding that these tariffs and duty what India is imposing on the US products, especially on ICT products. What are these ICT products is information and communication technology products, including some high-end phones as well. So here what it is that ICT plays an important role between US and Indian trade. Here what US wants that we should remove these price caps or duties, tariffs, whatever we are having on these 7 ICT products. We'll see later on what are these ICT products that which US wants a particular cut in the tariffs. Apart from this, US also want that you should remove the price caps on certain medical devices. So on certain medical devices, US wants to cut the price caps or remove the price caps sharply. What they want apart from this, more market access. More market access regarding agriculture and dairy products. So agriculture and dairy products, especially in the bilateral trade. तो हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील साइन होने वाली थी वो अभी साइन नहीं हो पाई. उसका रीज़न्स है कि टैरिफ्स और ड्यूटीज़ हैं. टैरिफ्स और ड्यूटी वो होते हैं जो किसी कंट्री में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर लगाए जाते हैं. स्पेशली यूएस चाहता है जो आईसीटी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो 7 प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंडिया टैरिफ और ड्यूटी कम कर दे. उसके अलावा कुछ मेडिकल डिवाइसेस है जो इंडिया को यूएस
प्रोवाइड करता है, तो इंडिया को जो यूएस प्रोवाइड करता है एज इंडियाज इंपोर्ट, तो उसका जो प्राइस कैप है, कैप का मतलब होता है अपर लिमिट, वो रिमूव कर दिया जाए। और एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में जो मिल्क होता है, डेयरी सेक्टर, उसमें उनको और ज़्यादा मार्केट एक्सेस चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसके अलावा बात करते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसमें एक ये लिमिटेड डील जो कि एक्सपेक्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका जाने के पहले, अब जो डील होनी है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि व्हाट दीज टू कंट्रीज एक्चुअली कंक्लूड विथ अ मीडिएटर, और वी कैन से विथ a negotiator between the deals of these three important issues. Apart from this, because these are the issues from the American sides, there are certain issues also from the Indian side as well. Now, what India has been telling US that we want again the status of GSP, Generalized System of Preference. ये मैं आपको लेक्चर क्लास में बता दूंगा कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है. Yes, Manshi, I'll take the doubt later and first understand the lecture, then I'll ask what are the doubts, then you can ask. So, generalized system of preference. If you don't understand in between anything, just do let me know in the comment section. But if I'm teaching, just listen, then later on you can ask anything. So just let me finish first so that you'll understand the concept behind it. Apart from this, if you have any doubt regarding this topic, you can ask any time in between as well. But if you want to ask something extra, then obviously later on after this discussion. Now, India, what India is demanding? India's demand is simple, that India want again the status of GSP. What is the GSP status? Generalized System of Preference. What does it mean? It means it actually helping Indian exporters. तो ये जो GSP है, इंडियन मानते हैं कि ये एक्सपोर्टर्स को बहुत बेनिफिट कर रहा था. तो एक्सपोर्टर्स जो हैं तो वो एक्सपोर्ट करते थे और उससे जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस के अंडर उनको कम टैरिफ और ड्यूटी पे करना पड़ता था यूएस में कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज इंडिया वांट दैट वी शुड resume this GSP status to India. But what US again and again saying that there's the problem between US and Indian trade is the trade deficit, which actually United States is facing. तो इसका क्या मतलब है, जो यूएस और इंडिया का ट्रेड है उसमें इंडिया को ट्रेड सरप्लस है, इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा है, इंडिया के एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम है, और यूएस को इस ट्रेड में नुकसान हो रहा है क्योंकि यूएस के एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है. इसी वजह से नाउ यूएस इज सेइंग दैट this is unfair and we need to do something about the trade deficit of United States between, we can say, the bilateral trade of India and the United States of America. Now what India want? India just again and again saying that this trade deficit we are reducing, and it has been actually going down in the last 2-3 fiscal years. But what happened after that? That it is very very difficult for the developing country like India to actually decrease this trade deficit quite a big margin in a short time. So this is what India is saying. Now this bilateral meeting, what Modi and the US President Donald Trump actually indicated on the Tuesday that India and the United States would announce a limited trade deal. What's the meaning of limited trade deal? It means the unsolved issues will not take, and these unsolved issues will take later, and whatever we have sorted right now we will see later in the during course. So here this is the main thing, that we will conclude the limited trade deal as soon as we have as soon before we seal the broader trade deal. So it's better to have something than nothing. So in the same lines we will have the same scenario. Now the more important thing is, you remember our commerce minister known as Piyush Goyal. What Piyush Goyal actually
was concluding with the US Trade Representative, Mr. Robert, also, and they have been talking about that US and India trade package with an open mind. So, negotiations are a two-way approach, and here India and Indian and US interests must be taken into consideration. Now, as I said earlier, what US wants India to cut or scrap the duties, tariffs, especially on ICT products, because America is having the expertise in information and communication technology. So around this ICT products around 20%. Regarding motorcycles, US wants reduction of 50% under automobiles. It US is wanting 60% of reduction in the tariffs, and regarding alcoholic beverages, it is around 150%. So this kind of reduction they demanded. But think from the India's perspective. India is seeking a trade balance in a better scenario. Like if they will give greater market access to India as well in United States, then it will be like they will also give certain greater market access in agriculture and dairy products as well. So now what New Delhi, it means India, is doing that they are removing the price caps on the medical devices such as स्टेंट्स. तो स्टेंट्स का भी मेरे पास इमेज नहीं है, आप इसको गूगल सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है, मेडिकल डिवाइस है एक. सो दिस एक्चुअली दिस रिमूवल ऑफ द कैप ऑन मेडिकल डिवाइसेस विल हेल्प अमेरिकन कंपनीज, मेनली द कंपनी नोन एज द एबट. सो एबट एक नाम की एक कंपनी है, उसको बहुत फ़ायदा होगा जब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया से डिमांड करेगा जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उस पर प्राइस कैप हटा दिया जाए. तो ये सारा सिनारियो अभी है. अब देखा जाए तो इंडिया के जो फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं ई कॉमर्स पॉलिसी में, तो ये किसी दिन जिस दिन ज़्यादा न्यूज़ नहीं होगी उस दिन हम आपको ई कॉमर्स पॉलिसी भी बताएंगे जो दिसंबर 2018 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी. और ये जो पॉलिसी है वो एक जो टारगेट था मेन, वो दो बड़ी इंडियन ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो मैं यहाँ नाम लेना सही नहीं समझता उनका, बट आप जानते हैं कौन सी दो ई कॉमर्स कंपनी इंडिया में बड़ी हैं, तो उनको टारगेट करते हुए ये पॉलिसी बनाई गई थी. तो इसी वजह से यूएस का कंसर्न ये है कि जो फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं पॉलिसी में वो इंडिया जो करता है वो सही नहीं है रिगार्डिंग एफडीआई रूल्स, ई कॉमर्स पॉलिसी और डेटा लोकलाइजेशन. डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है अगर आप इंडिया से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेटा इंडिया में ही स्टोर किया जाए, ना कि बाहर लिया जाए. तो ये डेटा लोकलाइजेशन की जो पॉलिसी है 2018 में आई थी. अब इंडिया का क्या फियर है, इफ़ इंडिया विल रिड्यूस द ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स इट विल लूज अराउंड 3.2 बिलियन यूएस डॉलर अ ईयर. तो हर साल इतना नुकसान होगा इंडिया को अगर इंडिया ने ये ड्यूटीज़ कम कर दी तो इसका जो लॉस है वो कई ज़्यादा है. अगर आप रेवेन्यू देखें अंडर जीएसपी, तो जीएसपी में जो इंडिया को रेवेन्यू मिल रहा है वो लगभग 200 मिलियन मिल रहा है, और ये टैरिफ ड्यूटीज़ कट करने पे 3.2 बिलियन का लॉस है. तो इससे आप समझ सकते हैं व्हाट इंडिया इज़ डिमांडिंग. इंडिया इज़ सेइंग दैट जीएसपी स्टेटस दे विल गिव टू इंडिया एंड इंडिया विल रिड्यूस और कट दीज ड्यूटीज़. Obviously it's an unfair deal we can say, but if you see that China and Hong Kong, if we reduce this duties in this, China and Hong Kong will also get the benefits for this. So will actually aim these cuts towards increasing the US imports, but China and Hong Kong will also take part and they will also get certain kind of benefits. Here we can say that India's imports of these 7 products that is related to the ICT, that is around 20.5 बिलियन. तो 20 बिलियन के प्रोडक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर 18 में आए थे. बट यूएस के साथ क्या हुआ है, यूएस ने इस चीज़ को अभी भी माना नहीं है. तो उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ है अभी भी डील आधे में ही है, अटकी हुई है. सो इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है एग्जेम्पशन, एक्स्ट्रा ड्यूटी जो इम्पोज कर रहा है यूएस, किस पे, स्टील और एल्यूमिनियम पे.
सो क्योंकि जीएसपी में तो फ़ायदा कम है आप देख रहे हैं, और यहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है टैरिफ कट करने, तो व्हाट इंडिया इज़ डिमांडिंग दैट यूएस शुड रिड्यूस द ड्यूटीज ऑन स्टील एज वेल एज ऑन द एल्यूमिनियम. So if they will reduce this, or they will provide duty free export from India to US, so called, it is the part of GSP. So what they are giving, they want, India want greater market access in United States of America. And obviously regarding agriculture, auto components, automobile engineering, now you know that India's automobile sector is down, and India's automobile sector is down means that India wants to boost India's export, then it will be in equilibrium, or it will revive in near term. So that they are saying. Apart from this, there are certain packages related to industries as well. But what India is saying, that India has been reducing the progress, or reducing the trade deficit between the United States and India. So that's the main scenario. तो यही तक अभी तक बात है. अगर कुछ डेटा की बात करते हैं तो जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, सो एक्सपोर्ट्स पे बात कर लेते हैं. जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया से यूएस जाते हैं, वो लगभग आप देखें तो 52.4 बिलियन डॉलर हैं. और अगर आप देखें इंपोर्ट्स, इट मीन्स जो इंडिया इंपोर्ट करता है, तो इसका मतलब इंडिया में ये गुड्स आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वो अराउंड आपके हैं $35.5 बिलियन. तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस इंडिया एंजॉय कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है. तो लगभग यहाँ आप देख सकते हैं 17.4 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली आपको ट्रेड सरप्लस जो इंडिया एंजॉय कर रहा है. बट दिस ट्रेड सरप्लस हैज़ बीन श्रिंकिंग. इफ़ यू कंपेयर विथ 2017, it was 22.9 billion. If you compare with 2018, it was 21.3 billion. These are actual figures, you can quote in the examination as well. But if you see what US is trying to do here, what US is trying, that what US wants, because US and China, there's a trade war going on. Now listen carefully. This trade war obviously will have an impact on 2020 US election. Now if you see with this trade war, the trade surplus that China is enjoying between these two countries has actually widened. If you see in 2017, the trade surplus China was enjoying was $375.6 billion. Now if you see in the current year, that is 2018, and that is the last year we can say, it was 419.2 billion last year. So actually trade war is not helping United States of America. You can see from the data. After imposing a lot of tariffs, sanctions, etc., actually despite having this trade war, these top two economies are not able to find a permanent solution. Now what US demanding? The trade surplus that India should reduce. So here we can say India is having a surplus, enjoying a surplus with the world largest economy. And if you see in 2016, it was 24 billion. तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2016 में 24 था, फिर 22.9 हुआ, 21.3 और अगले साल इतना एक्सपेक्टेड है. तो इट मीन्स अब इंडिया इसको रिड्यूस कैसे कर रहा है? इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग ऑयल ऑल्सो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ऑयल तो आपको इम्पोर्ट करना ही करना है, मिडिल ईस्ट से करें या यूएस से करें. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू रिड्यूस द ट्रेड deficit of United States of America between US and Indian trade. So this is what the scenario is, and apart from this, if you have any doubt regarding this, you can ask. Otherwise, I'll tell all of you about generalized system of preference. What is GSP? So I'll take doubts one by one. Yes, what Manshi is saying, that sir, I'm the student of BA third year. Sir, please tell me the fee in. So if you want to join the undergraduate program of Ecoholics, you can visit on ecoholics.in, our website. So there's a detail about undergraduate course as well. Otherwise, you can call on this number 910-9877-292. This is the number of our manager. She is managing everything. So you can call her and ask the details about it. Otherwise, you can also call me as well. So that is my number 6092. So 722-394-6092.
So we'll tell you details there because we are discussing here academically. So if you want to join any course, you can contact on these numbers. The next is economic में chapter, so chapter wise course available करा दीजिए sir BA. We provide chapter wise, we actually provide course wise, syllabus wise, and you can call on this number. I'll explain. And the next is uniformly, who's the commerce minister? So Piyush Goyal is the commerce minister. पीयूष गोयल आप जानते होंगे, जो इन्होंने इंटरिम बजट भी पेश किया था, जो एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, these two companies, e-commerce companies. यश दीक्षित सर, प्राइस कैप एंड प्राइस फ्लोरिंग डिफरेंस. सिंपल है, प्राइस कैप इज़ द अपर लिमिट, प्राइस फ्लोरिंग इज़ द लोअर लिमिट. जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ. Suppose we are having the upper limit of petrol. It means the petrol prices will not go up beyond 85 rupees. So अगर 85 rupees पे पेट्रोल प्राइसेस पहुँच गए तो इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते. तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, वो सरकार कंट्रोल करेगी. लोअर प्राइसेस लाइक वी आर प्रोवाइडिंग वेजेस, मिनिमम वेजेस. तो एक मिनिमम वेजेस होती हैं, जैसे डेली के जो मिनिमम वेजेस है मान लीजिए वो 30 रुपये हैं, तो 30 रुपये से कम आप किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते. So that is price flooring. Next question, विदिशा शर्मा सर, इंपोर्ट ज़्यादा है तो इकोनॉमी लॉस में क्यों जा रही है? किसके पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हैं? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा. इंपोर्ट ज़्यादा है तो इकोनॉमी लॉस में क्यों जा रही है? इंडियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं. इंडिया के इंपोर्ट ज़्यादा नहीं है, इंडिया के एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं. अगर आप इस फिगर्स को देखें तो इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग अराउंड 52 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्टिंग 35.5 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स. बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो इंडिया और चाइना में काफ़ी डिफरेंस है. बाकी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का डेफिसिट है, यूएस के साथ सरप्लस एंजॉय करती है. तो इकोनॉमी का लॉस होना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नॉट जस्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. द डोमेस्टिक फैक्टर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का. अगर मिल गया तो रिप्लाई कर दीजिएगा कि आई गॉट इट सर. इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस. तो जीएसपी क्या है? जीएसपी का फुल फॉर्म है, मैं आपको लिख देता हूँ, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. अगर आप फरवरी 2019 का न्यूज़पेपर देखेंगे तो इस पूरे महीने में यही न्यूज़ थी. अब ये क्या होता है? दीज आर दी बेनिफिट्स गिवन टू डेवलपिंग कंट्री. सो ये डेवलपिंग कंट्री के बेनिफिट्स होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाते हैं. It is US is giving these kind of benefits to 120 plus countries including India till recently, when they removed India from this list. Now what is the meaning of this? Other doubts I'll take after this GSP. It allows what? Concessional और ज़ीरो टैरिफ इंपोर्ट्स. इसका मतलब है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई चीज़ यूएस इंपोर्ट कर रहा है किसी भी डेवलपिंग कंट्री से, 120 प्लस कंट्री से, तो उसमें कंसेशनल रेट या ज़ीरो रेट पे दे विल इंपोर्ट. नाउ व्हेन इंडिया वाज द पार्ट ऑफ जीएसपी, इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग अराउंड 48.6 billion to United States of America. And so this is the total, and we can say that 5.6 were the part of GSP. So it means roughly we can say around 10 to 15% what India is actually availing the facilities of GSP. नाउ अभी जीएसपी आता क्यों है? क्यों यूएस ऐसा कर रहा है? क्यों ज़ीरो और कंसेशनल ड्यूटी पे ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंपोर्टिंग एट अ कंसेशनल और ज़ीरो रेट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज अंडर जीएसपी? व्हाई यूएस कैन नॉट इम्पोज द टैरिफ्स एंड दे विल अर्न मनी? Why they are providing these kind of benefits? Now what they were saying that they provide support to
poor and developing economies. So LDC, least developed countries, they are providing support to the poor or other development countries. Now why? Because this is to diversify the US trade. तो यूएस कहता है कि ये जीएसपी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं पुअर कंट्रीज को, और ये डाइवर्सिफाई करता है यूएस के ट्रेड को. तो यूएस के ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेगा. इसका मतलब क्या होगा कि अगर यूएस डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करेगा कोई चीज़ तो उनको वो लो कॉस्ट पे मिलेगी. और जब लो कॉस्ट रहेगी, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अंडरलाइंग आइडिया है इसके पीछे. तो ये जो लो कॉस्ट पे इनपुट्स मिलेंगे उससे क्या होगा, जो कॉस्ट है उनकी कंपनी की, जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाती हैं उनकी कॉस्ट कम रहेगी. तो जब इनपुट कॉस्ट कम होगी तो वो आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं. इससे यूएस की मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को प्रॉफिट बढ़ेगा. अगर ये सेम टूल्स आप किसी डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो वो कॉस्टली आएंगे. सेम चीज़ है अगर आप लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं कोई गुड्स, या आप समझ लीजिए किसी शॉपिंग मॉल से ख़रीदते हैं, तो दोनों में अगर आपको कोई भी एक आइटम है जो सेम है, बट आप नोटिस करेंगे कि मॉल में देयर वुडंट बी एनी डिस्काउंट, स्पेशली इन द वी कैन से इन द सीजन टाइम. बट लीन सीजन में डिस्काउंट होता है, बट जनरली मॉल्स में डिस्काउंट नहीं मिलता, और लोकल शॉप्स पे यू कैन बार्गेन. सो ऑन द सेम लाइन्स दिस इज़ ऑल्सो दे आर गेटिंग. इसमें ज़्यादातर क्या क्या आते हैं, जनरली एग्रीकल्चर गुड्स आते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं, इस टाइप के मेजर इंपोर्ट्स हैं. इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी इंडिया था, और ब्राज़ील भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है. तो इंडिया को तो अभी एनुअल रिव्यू में हटा दिया गया है. इसमें कुछ आइटम्स होते हैं, अराउंड 94 आइटम्स है जिसमें ट्रेड अलाउड होता है, जिसमें से 50 आइटम्स में इंडिया ट्रेड करता था जीएसपी का. अब जीएसपी क्या है, जीएसपी एक एग्जेम्पशन है किससे, एमएफएन से. सो एमएफएन आपने सुना होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन है, जो कॉन्सेप्ट है डब्ल्यूटीओ का, वो इससे एग्जेम्प्टेड है. क्यों? क्योंकि जीएसपी 1970 इसमें आया था, और एमएफएन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1995 में आया था. तो पहले ही उनने एग्जेम्प्ट करा लिया है. तो सिंपल सी बात है, इंडिया को वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया के जो 90% एक्सपोर्ट थे वो जीएसपी के बाहर ही थे, तो नॉर्मल टैरिफ में थे, तो नॉट मच इम्पैक्ट. बट यूएस ने कहा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, उसको रिड्यूस करना चाहिए, इसलिए उन्होंने जीएसपी हटा दिया. So that's the concept. I hope you understand, and if you have doubt you can ask. Next doubt is from Yash. What will be the impact of 60 billion deal which is signed between India and the US? So obviously that 60 billion deal will take tomorrow, but if you are asking this question today, I'll tell you in brief that this trade deal obviously helping both the countries, especially in terms of, we can say, the growth and diversity of both the countries. So that 60 billion deal would help Indian economy to revive. So I think that that will work in India's favor. That will actually generate jobs as well, and we can understand that this trade deal will finalize and expected to generate around 50k jobs in both the countries. So that will actually finalize in few months as well, and they will finalize this trade deal as soon as possible. So India and US actually have made significant progress towards this deal, but we have to see that how they will go, how they will proceed regarding the duty free as well as the larger market access from India and the US perspective respectively. So this is how the impact of this deal. Now next question is from Dinesh. Is it not a government failure that we are importing oil from the USA because it's costlier than Iran oil prices? No, it's obviously costlier, but we have to do something because USA is a superpower and USA is having the largest economy. If they are saying that we need to reduce the trade surplus from the perspective of United States, and deficit from the United States and surplus from India's perspective. So what actually the election campaign of the US president in 2016 was, that they will bring the US economy back on track.
And this is just because when they will reduce the trade deficit from the other countries as well. So you can say it is costlier, but due to Iran sanctions, we can actually import these kind of oil from Iran as well. But the main thing is that Iran is having sanctions, and we can import crude oil from Iran with certain limits. We cannot fully import. If you remember the 2012, I hope you actually I hope that you must have read this 2012 important trade deal between India and the Iran, when the developed countries USA and European Union denied India to pay in terms of US dollar as well as euro, that India paid in terms of rupee. So that was the time. So that's why India is not taking any chances, and India is importing oil from the United States. Another benefit is from that US is producing crude oil, and what India is doing, India's refineries are very strong. So what India is doing, India is making that crude oil into petrol, diesel, etc., and they are refining. So refineries are pretty good in Indian perspective. So it is benefit because the quality of oil between, we can say, Middle East and the USA. So USA oil is more efficient in terms of the Middle East because of the sulfur content into it. So Middle East oil is having more sulfur. So it will create, it actually creates more pollution. But when you see USA, it's having less sulfur. So that is the thing that I would like to actually tell you about this question. Yes, any other doubt if you have, or otherwise we'll wind up the session. So tomorrow we are meeting again at 10:30 p.m. with a new topic. So the 10:30 p.m. we'll meet, and you can bring your doubts regarding newspapers, and do read the newspapers, especially if you want to read. The Hindu is the best newspaper, but if you are reading Indian Express, then it is also good. Indian Express is also a good newspaper. The Hindu will give you certain tilt towards, we can say, a left point of view. Indian Express will give you the right or the center point of view. So this is how we can understand. Yeah, the next is, so does any PSU recruit NetJRF economics qualified candidates? Yes, they are recruiting. PSUs can recruit, especially the JRF candidates, and these JRF candidates can engage in research for their public sector undertaking. So they are taking. If you qualify JRF, you will get the chance to do research in IITs, IIMs, etc. So that will be beneficial for you if you want to go to research. There's no holiday. Holiday is on Sunday only. So we are meeting on a daily basis. So there's no doubt regarding this. 10:30 on a daily basis, half an hour discussion, and 10 minutes doubts. NetJRF is, if you are qualifying NetJRF, there are three benefits. You can qualify for assistant professor. It means you can apply in any college and you don't have to write the written exam, that subjective exam that they are conducting. So, and you just have to give interview on the basis of merit, you'll get the selection. Next is about JRF. So you'll go to research, you can do PhD, you will get funds as well. And the next thing is PSUs or any government sector body, they can take you as a researcher, so that will also benefit you. So these are the benefits of having the NetJRF. So that's it for today, and hope you like this initiative. Please don't forget to subscribe. And apart from this, yeah, there's one doubt left, what Manshi Pandey was saying. So we have to see.
Manshi, you can ask on our contact number given on the screen. So you can ask. You can ask on this contact number. Tomorrow you can call me. वी डोंट प्रोवाइड क्लास नोट्स. हम लोग क्लास नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. आप जो भी लेक्चर्स देखें उससे हैंड रिटन नोट्स बनाएं, उससे आपको याद होता है. तो जितने भी स्टूडेंट्स से नोट्स मुझसे मांगते हैं, बट उनको मैं ये टेक्निक बताता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है. तो आप उस फ़ोन नंबर पे मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे नोट्स बनाना है. ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल. अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच. गुड नाइट.